that note, welcome to AP Live Podcast. I'm Abir Lahiri. Joining me today in conversation is Gitanjali Pandit. Very मैं इनको कब से जानता हूँ 2018 से. When her first book Buddha at Work was launched. Currently we'll be talking about Buddha in Love and Buddha at Work. कैसे बने बुद्धा, जीवन में वो zen वाला मोड कैसे आए, लाइफ में प्यार में और दुनिया में आगे जो आजू बाजू वाली चीजें उसमें वो zen मोड कैसे आए, शांत कैसे रहे, एंड स्पेशली जहां लोगों के अप्रेजल बर्बाद हुए हैं, जहां लोगों के लाइफ में बहुत सारे क्राइसिस हैं, मेंटल हेल्थ की हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पे बात होती है जी. फर्स्टली, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी बुद्धा एंड व्हाट एग्जैक्टली इज बुद्धा इन दिस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट? हाँ, व्हाट अ लवली क्वेश्चन आबिर. क्योंकि परिभाषाएं बहुत अलग है. बिकॉज कोई बुद्धा को सोचेगा रिलीजियस फिगर है, कोई बुद्धा को एकदम शांत सोचेगा. क्या बुद्धा भी मिस्टीरियस हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या उसकी डेफिनेशन है? तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज बुद्धा. तो बुद्ध वो जो इंसाइट रखता हो अपने में, ठीक है, और क्योंकि अपने में तो इसलिए दुनिया में, दूसरों में जो इंसाइट की वजह से काम रहता हो, काम रहना चाहता है, और जो दुनिया को जजमेंट की, कई बार अंडरस्टैंडिंग से बहुत ज़्यादा जजमेंट राइज हो जाती है. अगर इफ आई से आई अंडरस्टैंड यू वेरी वेल, आई विल क्विकली फॉल इनटू अ वे ऑफ जजिंग यू, बिकॉज देयर विल बी ये कर दोगे, ये कर दोगे, एंड देयर इज अ लेबल दैट फॉलोज. तो वो मैं आई विल ट्राई टू लेबल यू. ठीक है. बट बुद्धा डज नॉट ट्रांजिशन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग टू लेबलिंग और जजमेंट. ओके. The Buddha is accepting because this is how the world is. Okay. The world is a certain way. Okay. Right? Why quarrel with that? बुद्धा वो जो अंडरस्टैंडिंग के साथ कंपैशन रखता हो दूसरों के लिए, ठीक है, और अपने लिए. बुद्धा वो जो वाइज डिसीजंस ले सके इन द कोर्स ऑफ हिज और हर लाइफ. सो द बुद्धा वाज आल्सो वेरी क्लियर. ही सेड कि सिर्फ मैं ही बुद्ध नहीं हूँ. The potential of Buddhahood lies in each one of us, right? So you have Buddha nature, I have Buddha nature, but वो बहुत बार dormant होती है, उससे हम काम नहीं करते. तो अगर हम foreground में चले जाता है, वो background में चले जाता है. बिल्कुल background में चले जाती है. तो उसको background से foreground में लाना is a process. अच्छा, why is it important? You and I both know कि अगर हमने decision ठीक लिया तो डिसीजन के आगे जो काम होगा वो ठीक होगा. सही बात है. अगर हम काम रहे तो हमने डिसीजन बेटर लिया. अगर हम उत्तेजित हो गए, इफ वी वर एंग्री, वी वर एजिटेटेड, वी वर फ्रस्ट्रेटेड, एंड इट गेट्स टू ऑल ऑफ अस, स्पेशली वेयर यू आर. मतलब दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. आप कहीं भी रहो, आज की डेट में गुस्सा मुझे लगता है कि एक बहुत ह्यूमन नेचर बन चुका है. कि पहले ज़माने में, या जो एटलीस्ट जो माँ बाप बोलते हैं कि गुस्सा, टॉलरेंस, पेशेंस, ये सब था. मतलब गुस्सा कम था, बाकी चीज़ें थी ज़्यादा. आज की डेट में वो मिसिंग है. क्योंकि हम सबके फिजिकल ब्रेन बहुत एजिटेटेड रहता है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है. Okay. तो आपको एक बात बताऊँ, क्यों ऐसा? वही बात बता रही हूँ कि देखिए, द बुद्धा वाज अ वेरी वेरी wise man, and he was actually the first psychologist that the world has known. Okay. 2600 years ago. A lot of people call him a coach, a lot of people call him a psychologist, but one thing is for sure, he knew human nature, he knew human behavior. तो हम जब कोई भी चीज़ एक्सेस में करते हैं, which is why he said come to the middle path. Now what is the middle path? The middle path is of enjoying life without greed. Okay. Right? Not doing things to excess. हमारा माइंड क्यों एजिटेटेड रहता है? वी आर डूइंग सोशल मीडिया टू एक्सेस, वी आर डूइंग द स्मार्टफोन टू अ पॉइंट कि हम स्मार्ट नहीं रहे भाई. तो आप बन जाओ, आप हमें बना दो. यू नो, वी आर नाउ प्रिटी डम. All this smartness is in the phone, right? Because we've now become dumb because of it. Notification आती है, we get so startled, you know, and we are so compelled to look at the phone. We feel कि it's such an integral part. And अभी होना चाहिए. अभी होना चाहिए. हाँ, बिल्कुल अभी होना चाहिए. We have a growing restlessness, right? आज की डेट में neurologists and psychologists have accepted the fact that the modern brain is now ADHD. The neural pathways are now in a state which is comparable to
ADHD. It's common for everybody. It is common for everybody. वो जो आप कह रहे हैं कि हम सब लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, हम सब agitated feel करते हैं, we are less composed, we are less tolerant, we are less patient, simply because of our way of living. Netflix's CEO said at one point, and it's a very sort of well-known thing, he said that my biggest competitor is sleep. The biggest competitor for Netflix is sleep. It is the most, I would say, devious and damning thing that anybody could have possibly said. Because अगर आपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि हम जानते हैं people who work in the area of neurology of human behavior, we know the impact of sleep deficit. We know the lack of sleep has such a hugely detrimental effect on behavior, on mental health, physical health, emotional well-being. तो अगर आपसे किसी ने स्लीप छीन ली, जो कि हर डिवाइस और हमारा लाइफस्टाइल छीनता जा रहा है, और ये मैं आपको बता दूं कि स्लीप डेफिसिट जो है वो संडे को 12 बजे तक सोने से पूरा नहीं होता ना. स्लीप डेफिसिट ऐसा नहीं है कि भाई आपने उसको कैरी फॉरवर्ड करते चले गए अकाउंट्स की तरह और फिर आपने उसमें क्रेडिट कर दिया तो वो क्रेडिट पीछे का जो डेफिसिट है उसको पूरा कर देगा. इट डजंट वर्क लाइक दैट. रात की नींद आपकी रात की नींद. वी वर जस्ट टॉकिंग, अभी हम लंच करने के बाद हम बात कर रहे थे एंड आई जस्ट टोल्ड एवरीबडी कि रैंडमली आप एक्चुअली सब लोग अपना चेकअप करा लो. प्रोबेबिलिटी 90% है कि सबका D3, विटामिन D3, B12 ये सब कम होगा. बिल्कुल. Because nobody steps out of the office, nobody steps out any which way to play. Right. कब किसी को याद है कि कोई खेलने गया हो? Does Buddha also mean कि ये जो जीवन के structures हैं, like for example, being with the family, part of a culture, part of sports, entertainment, ये सब भी होना चाहिए? या जैसे बुद्धा था सन्यासी वैसा होना चाहिए? नहीं. The Buddha was a very, very hard-working sannyasi. Okay. So the typical day of the Buddha was that he would, according to two different versions, one is that he would not sleep the whole night. One is that he would get up very early in the morning. Then he would enter a state of meditation. Then he would do a prachar of his dhamma to people. Then midday he would take his begging bowl and he would step out if he was going to step out. If he had been invited by somebody, then that was fine. Then he would step out, come back, eat a solitary meal by himself. Then he would rest for a bit and then he would start doing dhamma again for people in society. So log aate the, if he was staying at a particular place, people would come from kings to peasants would come to hear him preach. Then he would preach for many hours again and then he would retire for the night. And he would also take care of the administrative and other issues of the Sangha. Because he was also the king. No, that of the Sangha. Sangha is the community of monks that he created. Monks and nuns. Right? So he would pay attention to... yes. And incidentally and interestingly enough, the Sangha is the world's oldest living community of people. So it's till today. So 2,600, 700 years it's lasted. Okay. So the point is that he was not basking under the sun in good weather and doing nothing. He was a very, very hard-working man, and he worked, rested, went out, rested. He spoke at length, continued speaking, and he was motivated only by one thing कि भाई जो मुझे आता है आप मेरे से सीख लो ताकि you become a happier human being at the end of the day. Right? Makes sense. And very interesting, and I find it very interesting in all my research on the Buddha, that after the Buddha attained enlightenment, he, for a long period of time, about 49 days, 40 odd days, he entered a period of great conflict within himself. And this is where it is said that the Lord of Temptation, Mara, came to him and said that, tried different ways of tempting him and distracting him. Now, distraction is also actually a very dangerous element in life, not just temptation but distraction. To say कि आप ये क्यों कर रहे हो?
You know, so one of the techniques that Mara adopted was, first he said that you are required at home. Your father needs you. You must run home to the Shakya tribe and, you know, attend to what your father has to say. That was one. Then there was, of course, Mara's 3 daughters who came to tempt the Buddha. Then there was a lot of, you know, storms were unleashed. And then at the end, the Mara told the Buddha कि अच्छा तुम्हें enlightenment चाहिए थी, तुम्हें enlightenment मिल चुकी है, तो now is the time for you to enter nirvana. You don't have to stay around, your work is done. Because Mara's job description, JD, is to keep this world in a state of negativity. The Mara was very, very apprehensive कि अगर बुद्धा ने preach करना शुरू कर दिया तो negativity कम हो जाएगी और उसके job description पे असर पड़ेगा. I'm an HR professional at the end of the day. True. Achha, just let's go back in time. When you started writing Buddha at Work, this is 2018, you may have started writing it before. Right. What exactly was the brief? What exactly were you thinking around that time? Why you thought of writing this book? And then we'll come to Buddha. Okay. So, you know, I was a career HR professional and I was the CHRO for some of India's top companies. In my last innings as a CHRO, I had a hard stop to my corporate assignment. And I was asked to leave because of a value-based difference with someone there. And I entered a period of great difficulty emotionally because I was struggling to get a job. And I had been, till then, a hugely regarded HR professional, extremely well known within the country. And people were like, okay, you know, job is not a problem at all. And I would have thought that for myself, job is not a problem at all. But, and it so happened that that year, which was 2015, I was looking after my father, who was very unwell. I was looking after my brother, who was also unwell. We were bringing up our 2 daughters. They were very small at that time. तो मेरा हर रोल जो था वो केयर गिविंग का था. And by the end of 2015, I felt I'm sliding into depression. क्योंकि बहुत ज़्यादा emotional tiredness थी and there were no easy answers coming my way. And my husband thought that this is the ideal time since I am at home. He must strengthen his business. He must work much harder. So he practically left me alone at a time when I was just giving emotionally, right? I wasn't receiving anything. So फिर मैंने अपने से बात करी और मुझे लगा कि if I have to save myself from sliding into depression and doing something stupid, then I have to find a way out. The locus of control, when you look out for a job, the locus of control is not with us. True. I might be the most qualified person on the face of this earth, but if nobody needs you or nobody is willing to hire you, that's right. किसी काम का नहीं. किसी काम का नहीं ना. Locus of control is not with me. So जिसको agency कहते हैं आजकल और locus of control कहा जाए, तो if it is not with us, then we end up moving towards depression, frustration, a whole host of other things, which is not helpful. तो locus of control मेरे पास क्या था? मेरे पास एक locus of control था कि मैं पढ़ सकती हूँ, मैं research कर सकती हूँ. That locus of control is with me. That agency is not with anyone else. It's with me. So I started reading, and then from there, because I had been practicing Buddhism for a very long time, I knew that one way of helping myself is by helping others. Okay. तो अगर आप कभी discouraged हो, helpless feel कर रहे हो, hopeless feel कर रहे हो, तो किसी को encourage करिए जाके, and it will lift you out of whatever you are experiencing. Oh. You will start feeling very encouraged and hopeful. Yeah? So science has today proven it, that when we start working for a community or we start volunteering for service, we will automatically feel healthier. Dopamine आता है, serotonin आता है, वो 50 hormones release होते हैं, which is obviously right. So you feel joyous. Yes, you feel much better. So I said, okay, what is it that I can do to help other people? I said, I can help other people in their struggle with their work by marrying what I know of what the Buddha taught and what I have learned and observed and seen at the workplace, because nobody else had the kind of overview that I did as the CHRO and as an HR professional. So I said, let me marry the two.
and hence Buddha at Work was born. वाओ, क्या क्या चैलेंजेस इन जनरल तब लगा जो एड्रेस करना ज़रूरी है? एंड इसके मतलब दो पार्ट्स में क्वेश्चन है. What are the major challenges you actually addressed in the book? Secondly, how are they different? Because this was released in 2018. We are sitting in 2024. Right. How has... Though this is the updated edition of. Okay, but for example, when you started writing it or when you completed the first version of the book, first edition of the book, how is it different from that time to now? Because now you see much more millennials and Gen Zs in the workplace, which is extremely different from maybe 2018 or 2015 Right. when you left. Right. So the age factor has changed. Now if you see around, you'll see much more millennials and Gen Zs actually working in the corporate space. Which like there has been a lot of researches that a lot of people face, typically managers face a difference how to manage and maneuver these things. Is it one of those things, and what are the fundamental differences you have witnessed? So I think what I wrote then and what I wrote now is very largely, almost all of it holds true even now, because these are timeless elements, right? Okay. If you are facing toxicity at work, if you're facing politics at work, if you are unemployed and striving for employment in whatever way, if you are striving with team members, if you're struggling to remain motivated, if you are struggling to find your way out of burnout and stress. So this holds equally true in 2024, and it'll hold equally true in 2048 as it did in 2015, 2016. मीडियम से इंटेंसिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी बाकी सबसे. आई थिंक एक चीज़ जो चेंज हुई और जो मुझे जब मैंने एडिट की बुक फॉर द न्यू अवतार, I did include a bit about the impact of the lockdowns and the corona and the pandemic, right? Because that was so unprecedented. Nobody would have ever thought that. Work from home culture. Work from home culture जो शुरू हो गया, right? But the book still holds very true when it comes to building wellness, mental wellness, emotional wellness, क्योंकि जो आज की डेट में कल्चर है वो वर्क फ्रॉम होम हो या पेंडेमिक का फॉल आउट हो या द फैक्ट दैट social media usage has gone up nearly 200% since the pandemic started, globally. And the impact that social media and excessive gaming and excessive use of technology, the harm that it is doing to us and to our physical brain and mind, is enormous. And the kind of changes that we are undergoing because of this, that is phenomenal. So the book will always give you solutions to essentially human problems, which are not going to change. वो कोई भी दशक हो, वो कोई भी साल हो, those are not going to change, क्योंकि वो हमारी human nature से linked है. और वैसे ही लोगों से इंटर रिलेशंस जो है वो आप वैसे डील. अच्छा, कुछ क्विक क्वेश्चंस जिसके आप बुद्धा की बुद्धि यूज करके आप थोड़ा उसको डिकोड करके बताइए. हाँ. कोई इंसान बोल रहा है कि मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान करता है, बड़ा खड़ूस आदमी है, कैसे डील करें? बुद्धा अगर आप हैं तो कैसे डील करें? तो आपको पता है कि आपका बॉस जो है, सपोज आपका बॉस है और आपकी टीम में कितने लोग होंगे? आप बताइए, जिनका वो बॉस है. जिनका वो सब मान लीजिए 5-6. तो हर 5-6 का रिएक्शन आपके बॉस के लिए वो नहीं होगा कि ये खड़ूस है और मुझे तंग कर रहा है. ट्रू. सही है कि गलत? हाँ. वो 5 से 50 भी होंगे तो 50 लोगों का रिएक्शन उस एक बॉस के लिए डिफरेंट होगा. कोई बोलेगा यार बहुत सही बंदा है, कोई बोलेगा यार इससे खराब कोई बॉस हो नहीं सकता, मेरे को तो कंपनी छोड़नी पड़ रही है इसके चक्कर में. कोई बोलेगा कि ठीक है यार मैं अपने काम से काम करता हूँ तो ही इज़ ओके, राइट. कोई बोलेगा कि इससे ज़्यादा स्ट्रेस मैंने अपनी लाइफ में नहीं झेला जो कि इस आदमी की वजह से झेला. कोई बोलेगा कि इसने तो मुझे ट्रेन कर दिया. तो स्ट्रेस क्या बॉस से आ रहा है? स्ट्रेस सामने वाले से आ रहा है. स्ट्रेस क्या बॉस से आ रहा है? आपसे खुद से आ रहा है. ऐसा आपसे खुद से आ रहा है. आपका रिएक्शन है कि वो बॉस खराब है. वो बॉस तो बॉस है. अब वो किसी के लिए अच्छा भी है, किसी के लिए बुरा भी है. तो व्हाट इज इट दैट आई नीड टू डू टू लुक एट इट डिफरेंटली? ओके. राइट. देखिए
स्ट्रेस को चेंज करने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, या तो आपको अपनी इंटरप्रिटेशन चेंज करनी पड़ेगी या आपको सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन किस पे डिपेंडेंट है? मेरे पे डिपेंडेंट है। और सिचुएशन चेंज करने के लिए तो दो ही रास्ते हैं, बॉस को तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। बट गीतांजलि, इसका एक काउंटर ये है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देयर आर 5-6 पीपल इन अ टीम और उसका एक बॉस है। देयर आर 2-3 गर्ल्स, 2-3 बॉयज। उसमें से एक लड़की आके बोलती कि ये आदमी मुझे सही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मोलेस्ट कर रहा है, बट वो एक बायस है। ही इज अ सेक्सिस्ट गाय। वो हमेशा बोलेगा कि नहीं, औरत है, औरत से काम नहीं होगा। वो गलत है, राइट? अब यहाँ पे जो आप बोल रहे थे कि एजेंसी है, वो एजेंसी उसके पास नहीं है। वो कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, अगर कोई आदमी सेक्सिस्ट है और बोलेगा कि नहीं लड़की काम नहीं कर सकती, तुम लोगों का काम सिर्फ यही करने का है, मैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आदमियों को दूंगा, वो तो गलत है। इसमें उसकी क्या गलती है? नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। देन शी हैज सम ऑप्शंस। अगर तो सिर्फ कंप्लेंट में हम उलझ के रह जाएं या बोलें कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो हम कई बार प्रॉब्लम में बहुत उलझ के रह जाते हैं। जैसे महाभारत में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। शी हैज टू बी सॉल्यूशंस ओरिएंटेड, राइट? So what are the possible solutions that she has? She can talk to colleagues. She can find out what is the best way to work. She can also try in a very neutral way, unemotional, non-accusatory way to have a dialogue, right? We all come with certain biases in life. True. Right? I may be the most enlightened of people, but I will also have some hidden, unconscious, unknown bias, right? Which सब में होता है, right? मुझे नहीं लगता कि मैं आज तक किसी से मिला हूँ जिसमें तो bias हो। अगर कोई sexist है, we don't know why that person has become a sexist. We don't know what is उसकी back story क्या है, right? तो रिएक्ट करने से तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। टू से कि दिस गाय इज डूइंग इट लाइक दिस, यस इट इज फैक्चुअल, सम पीपल आर सेक्सिस्ट एंड दे क्रिएट दैट प्रॉब्लम वेयरएवर दे आर। तो आप उसको एक ओपन डायलॉग कर सकते हैं, आप उसको स्किप लेवल मीटिंग कर सकते हैं विच इज नॉन एक्यूजेटरी, राइट? जिस वक्त हम एक्यूजेशंस करना शुरू कर देते हैं, पीपल बिकम वेरी वेरी ऑफ गिविंग अस एन ऑडियंस, राइट? So the Buddha element then comes to the fore to say what is the wisest way of dealing with this. Okay. Right. The wisest way, not the most violent way, is never the wisest way. Right. The most reactive way is never the wisest way. True. So what is it that I can do to mitigate this reaction? Go into my safe space in my own head and think through what I can do to change this situation. Makes sense. एक और सवाल आया। गुगली नहीं। बहुत सारे लोग आजकल एक नया टर्म यूज किए हैं और फॉर वैलिड रीजंस की, ठीक है, कई लोगों को फील होता है, विच इज कॉल्ड बर्नआउट। इतना ज्यादा काम करा रहे हैं टीम वाले मैनेजर कि मैं हो गया हूं परेशान। तू तो नहीं बोला ना? हाँ, आई वाज लुकिंग एट इट। नो, अरे वो बिल्कुल चिल मारता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज कई लोग परेशान हो जाते हैं, पूरे दिन रात काम हो रहा है। और मुझे लगता है एज अ मैनेजर, एज अ एम्प्लॉय, एज अ किसी का जूनियर, मुझे हमेशा लगता है कि एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। आप एक ऑफिस में 8 से 10 घंटे अपने दिन के देते हो, विच इज एटलीस्ट 1/3 ऑफ योर लाइफ। वो बहुत इम्पोर्टेंट जोन है। आपके रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं, जो आप जिनके साथ काम करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टीम में आप करते हो उसका काम करते हो, उसका माहौल अच्छा होना चाहिए। लोग प्यार मोहब्बत से तो बात करना चाहिए, वो तो बाय डिफॉल्ट है, बट मुझे लगता है बर्नआउट भी नहीं होना चाहिए। इन कई सिचुएशंस में होता है, तब क्या करे आदमी, कैसे बने बुद्धा? देखिए, जहाँ बर्नआउट तक पहुँचने की सिचुएशन है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, हाउ आई एम टेकिंग माई वर्क। So I have also been in situations where I have worked, 60-70 hours a week. So it's not that I'm saying this out of nothingness. So in my case, I didn't come to a point of burnout because I had a great support system at home and because I really, really enjoyed what I was doing. So मुझे ये नहीं लगा कि ये मेरे से कोई करवा रहा है and it is impinging on me, right? So one element is, are you willingly taking on more and more work?
then you're not going to burn out. If you're feeling very hard put to कि मेरे से कोई काम करवा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो फिर हम वापस आते हैं, what is it my interpretation? What can I do to change this? Or what can I do to change the situation? So घूम फिर के we are going to have to find solutions there. A lot of times burnout का एक element जो हमारे कंट्रोल में होता है, which is the element of mental stress and a feeling of being cornered or desperation, cornered, frustration, आप जो भी उसको term कहना चाहें, उसको चेंज करने में हमें अपने लाइफस्टाइल को ही एग्जामिन करना पड़ेगा, और हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हम पे ही डिपेंडेंट है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है. If I'm not making that time to sit in the sun for 10-15 minutes, you know, my last office was very close to where you are right now, and I had this practice in all the winter months that I would very quickly eat lunch and I would go and walk in the sun. जो ठंडियों में हम भी करते हैं, बस गर्मियों में कैसे करें वो नहीं समझ में. गर्मियों में नहीं कर सकते, but I would do that, like that was my very important part of my day. Very good. You know, and it's not that I didn't have pressure, it's not that my phones were not ringing, but I made the space to do it because I felt कि if I don't do it, मतलब it's for my survival. It's my हाँ, ये survival my है. well-being, हाँ. right? For my और well-being. मुझे लगता है अब ये सर्वाइवल वाले मोड में हम आ चुके हैं. अगर हम ये नहीं, नहीं करेंगे तो मतलब उसको सर्वाइवल क्यों कह रहे हैं आप? दिस इज योर मैटर ऑफ योर वेल-बीइंग. एवरीबडी हैज सर्टेन प्रैक्टिसेस व्हिच आर वेल-बीइंग प्रैक्टिसेस. बट फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है जो कभी करता ही नहीं है, फॉर एग्जांपल वो कभी कोई फिजिकल वर्कआउट ही नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? वही पॉइंट है. अगर आप उसको बोलो आपकी वेलबींग है, बोलेगा भाड़ में जाए, नहीं चाहिए मुझे वेलबींग, तो उन इंसान को आपको बोलना पड़ेगा सर्वाइवल है. अगर आप नहीं करोगे जिंदा नहीं बचोगे. नहीं तो फिर देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हम किसी को बचा नहीं सकते, और कोई हमें नहीं बचा सकता. बिल्कुल सही बात है. ये तो हम The Buddha was very clear. If you pick up either of the two copies, my books will start with the quote by the Buddha, which is very, very crystal clear. No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path. तो ये एक हम उम्मीद में रहते हैं कि कल को सिचुएशन बेटर हो जाएगी, या तो सिचुएशन चेंज कर जाएगी, या कोई देख लेगा मैं कितनी हेल्पलेसनेस में हूँ तो मेरे को आके बचा लेगा. As Rabindranath Tagore said, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. बिल्कुल सही बात. अब आते हैं बुद्धा इन लव. प्यार में कहाँ से बुद्धा लाया जाए? आजकल सोशल मीडिया में बहुत मीम्स बनते हैं पूरे दिन रात कि टॉक्सिसिटी प्यार में एकदम घुल चुकी है. अच्छा, मतलब मैं तो रोज यही सब देखता रहता हूँ, कहीं के कुछ मीम्स, कहीं के कुछ मीम्स. टिकटॉक बीच में आया था, उसमें अलग वायरल कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती थी. तो पॉइंट इज हाउ डू वी बिकम बुद्धा इन लव एंड व्हाट एग्जैक्टली इज बुद्धा इन लव? सो देखिए, बुद्धा इन लव इज समवन हु कैन लव डीपली, who can love very well, and this is intimate relationships. I'm not talking of any other relationship. मतलब not flings or extramarital affairs, ये सब नहीं है. Extramarital affair देखिए आपको बहुत प्लेजर दे सकता है, लेकिन हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म में नहीं देगा, क्योंकि उसमें आप बैलेंस नहीं कर पाओगे बहुत सारी चीजें. बट अगर मतलब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल किसी का ही स्पेसिफाइंग इट्स हाइपोथेटिकल. नो, बिकॉज़ आई एम टेकिंग इट एट फेस वैल्यू. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स ना. मतलब एक ऐसा है जो apart from marriage he goes out to many people or she goes out to many people, and मतलब ठीक है, I'm not judging anybody, but I'm saying that's one way of what you are saying कि वो आपको long term में happiness नहीं दे सकता. But for example, if somebody is actually trapped in a bad marriage and he or she why is it trapped? देखिए हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू आर मच मोर एक्सपीरियंस देन मी, बट हम जिस सोसाइटी में रहते हैं there are many numerous millions of people who may be trapped in a bad marriage because they don't have the option of divorce, they don't have the option of separation. Right. There are, why? Because of the family obligations, because of the societal obligations, because of children, because of n number of reasons. देखिए कोई भी रीजन हम किसी को भी देते हैं, तो the Buddha would not have said it, but I would like to say it. घंटा. ठीक है. Right. There is no such thing as a societal obligation. Who are you obliging? ठीक है. If nobody is leading your life, अगर आपकी लाइफ में you are feeling trapped
and this is what I say repeatedly, you are not aware of it, that Buddha in Love is as much my experience as anything. Okay. I was in a highly abusive marriage for a few days. That was an arranged marriage many, many years ago. And a friend of mine literally had to rescue me from there when she saw my plight. And it is not easy to, it was not easy, and it is for no one, it is easy, especially a woman, to say that I am not going to put up with this, with whatever is happening, right? True. My father was old, he had retired, and it was a very tough climb out of that abyss for me, professionally, personally, emotionally, financially, in every which way. But the teachings of the Buddha came to my aid at that point of time, and which is why I took on the challenge of writing Buddha in Love, because again, as I said, I'm motivated by reaching out to people through my work and helping them. You know, so things are not easy, but then we have to decide what works for us. हम किसी भी सिचुएशन में हो, देखिए, we have to choose what works for us, and then after that we cannot continue to whine, moan, bemoan whatever is unfolding from there on. My cousin works with people who go through domestic violence. She's overseas, and it's very interesting. I learned one thing from her. She said that for women who are in highly abusive marriages, especially with children, it is never easy for them to step out. She says because they have to choose between the practical and the impractical. So what is the practical? If you continue to be in an abusive marriage, you continue to enjoy let's say financial security, having a roof over the head, khana hai, khane ke liye ye hai. And then the other alternate is when you are not in that abusive marriage, you may have freedom, but you may not have financial security. You may not be in an abusive relationship, but then you are wondering about how society is going to treat you or perceive you, right? So you have to have that strength at that time. So a lot of people actually make this choice. But having made this choice, A, I don't think it's the right choice to make. B, I think it destroys far more than what it achieves to say that I'm going to stay on for the sake of my children. Because the children are also suffering. They are devolving from that violence. They are, you know, in this thing. Maybe it might have been easier for me because I was already a very well-educated person. I belong to a very you know, liberal kind of a family. I was actually coming to that. Yeah, so it may not be, my narrative may not be. But I find... Because we, see, you're born and raised in Delhi, right? No? Yeah, practically. Practically. So consider, जो मैं example बोल रहा था, I'm not, मतलब this is not a derogatory statement for anybody. नहीं, I understand. But क्या आप कह रहे हैं कि अगर छोटे शहर में कोई हो, तो उसकी reality, हाँ, गाँव. अच्छा देखिए, गाँव में मैंने देखा है कि जो एटलीस्ट गांव का नहीं मैं कह सकती, मैंने ये देखा है कि जो एक बहुत मध्यम वर्ग या बहुत सॉर्ट ऑफ पिछड़े हुए वर्ग से जो लोग एटलीस्ट शहरों में होते हैं, दे आर फार मोर करेजियस, दे आर एबल टू टेक स्टेप्स in cities, right? In cities, because they have seen the difference, you know, to they have seen the help themselves. Yeah, to help themselves. So it is up to each one of us. But I think when one person makes that change, then we call upon society to change. You know, you call upon society to change. And बहुत बार, and very unfortunate fact of life, बहुत बार women are victims of other women. देखिए, अगर वो उसकी माँ ने उसको डिफरेंटली रेज किया होता आदमी को, जो शायद फिजिकल वायलेंस इन्फ्लिक्ट कर रहा है औरत पे, या उसने उसको बोला होता कि दिस इज समवन यू हैव टू रिस्पेक्ट, दिस इज इक्वली अ ह्यूमन बीइंग, दिस इज समवन हु इज हियर टू यू नो help you, you know, and be with you. She's not your servant, right? She's your partner. Yes. So I think the whole story could happen very different. But then what is that? It's very interesting. I saw this movie a few years ago.
उसमें दीप्ति नवल is playing the role of the mother of this very violent person. Was it Anushka Sharma and Deepti Naval, and was Let it? me just do a quick Google. I think पहली बार ऐसा is हो it रहा है पॉडकास्ट के बीच में हम सवाल Highway 24 or something like that. हाईवे 24 Was Is it? it हाईवे नहीं हाईवे तो उस पे था ना स्टॉकहोम सिंड्रोम पे No, not Alia Bhatt. This is Anushka Sharma. Deepti Naval Anushka Sharma. and Anushka Sharma And there's a movie set in Haryana. Huh? Very interesting. Aniston. And highway, something highway. I have seen Aniston. Huh? What a wonderful movie. हाँ. So देखिए the Randeep character. Hooda, right? No, no. This is not Randeep Hooda. No. Just because I said Haryana, you Highway said is it like. Randeep Hooda. Just because I said Haryana, you said Hooda. No. But Haryana भी said है Aniston भी, huh? हाँ. So see the character played by Deepti Naval, the mother of that very violent young man. She is willing to help Anushka till she realizes that she is not in conflict with the son. Then she is again enemy number one. She is very compassionate कि अच्छा तेरे साथ ऐसे हो गया, मैं तेरी help करती हूँ. You know, they shot her husband in a drunken brawl and all that, you know, and मैं तेरी help करती हूँ. And she realizes that it is actually the son her son who has done it. Then she is back to being her evil self. Why? Calling spade a spade Yeah. takes guts. No. So had she raised him right, this entire situation wouldn't have happened. And ये हम देखते हैं आप. I always find it amazing, you know, this aspect of human nature. In movies, you see this. Movie after movie, you will see this across the globe. So there'll be this assassin or this person who has no respect for human life. वो किसी को भी गोली मार रहा है, कोई मार रहा है, कुछ कर रहा है. उसके फैमिली मेंबर को कुछ हो जाए तो फिर आप उसको देखो. क्यों भाई? तुम्हारा फैमिली मेंबर है. जो जिन लोगों के साथ तुम कर रहे थे वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं. But वो रियलिटी नहीं, ऐसे लोग होते हैं. The point is that ये डबल स्टैंडर्ड्स में से तो हर इंसान डील कर रहा है. हाँ, तो फिर अगर हम डबल एक सिंपल एग्जांपल, एक मंत्री है, उसके गली में उसका शहर है, उसकी लोकेलिटी देखो, ऐसा लगेगा 5 स्टार होटल है, लेकिन वो बाकी जगह के लिए थोड़ी काम करते होंगे. नहीं करते. Do you expect that the other chap will be doing that for his constituency? No, I'm not saying constituency. Constituency तो इतना बड़ा एरिया है. वो अपनी गली, आप ये सबके लिए है. मतलब मैं बोल रहा हूँ नेता, ये हर चीज के लिए है. तो देखिए, टीचर अपने बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, क्लास में नहीं पढ़ाएंगे. नहीं, that's not true. That I think. But sometimes teachers fail to teach their own children. So because the child is not accepting what the parent has to say. हाँ, मतलब अब तो पेरेंटिंग भी हाँ, बॉल गेम हाँ, है. ठीक तो है. but खैर, how are so you know one of the characters in Buddha at Work asks me about asks Gautam, not me, you know, the protagonist in the how they can create the ideal workplace. हाँ, देखिए हम सब क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि हम आइडियल वर्क प्लेस में हो, हमें आइडियल एम्प्लॉयर मिले, हमें आइडियल कंपनी मिले, राइट? सो लेकिन एक सेकेंड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ आई कैन फाइंड दैट एग्जैक्ट line for you, right? Actually, the whole chapter is called Creating Your Ideal Workplace, right? अच्छा. कितना प्यारा बुकमार्क है. Thank you. Not all goals need to be major life-altering ones. There is always place for smaller milestone on your list. छोटी छोटी खुशियाँ. And that's actual happiness, huh? So देखिए, if I had to help others, how would I do so if the premise for it had to be the ideal place of work, right? From my experience of more than 2 decades as a human resources professional, I knew well enough that situations and organizations were far from ideal. I voiced my concerns to Gautam, and he looked at me intently and said, I'm not asking anyone to expect the ideal. I'm asking everyone to create the ideal. The ideal movie, the ideal deal, the ideal family, the ideal building, and the ideal place of work are all created by human beings. Someone has to work for all these things.
someone labors hard and without complaint to ensure that the ideal building comes up. So you too can and must create the ideal. Your right thinking, right views, and right efforts are all that are needed. And of course, your perseverance too. People in workplaces may not respond to your right views and right efforts instantly. It may seem to you that one individual is not empowered enough to influence so many, or that someone who is working hard does not necessarily have the position or authority to make people listen to them. I want you to tell people that they and you have the ability to become the world's hero. You can achieve all that you desire. You can be the catalyst for change, not by announcing it to others or becoming preachy about it. But this inner shift shows clearly in your behavior, your interactions, and your approach to work. When you change, your example influences someone else to change, and that is when a shift in the direction of progress begins. एक छोटी सी चिंगारी वो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदे कर देती है, एक अच्छी मछली भी पूरे तालाब को एकदम साफ कर सकती है. Absolutely. वैसा वाला बिल्कुल. सही बात है, सही बात. क्या क्या मेजर आपको इसमें बुद्धा इन लव में चीजें आपने कवर की इन जनरल? मतलब देखिए, मैंने कवर किया है रिमेनिंग सिंगल, द क्वेस्ट फॉर अ लाइफ पार्टनर. क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत लोगों की लाइफ में और मेरी लाइफ में खुद बहुत स्ट्रगल रही टू फाइंड द राइट लाइफ पार्टनर. बहुत सारी मिस ट्रायल्स हुई, मिस स्टेप्स हुए, तो मेरे लिए तो बहुत ही क्वेस्ट सा रहा. It's very amusing today, now that I've been happily married for 18 years. Today I can smile about it, but when I was going through it, it wasn't anything like that. And then how do you lead life, really? Because my happiness cannot be conditioned on finding that right job as the CHRO. My happiness cannot be defined by finding the right life partner. क्योंकि वो हनीमून खत्म होगा, वो CHRO की पोजीशन भी खत्म हो सकती है, मेरे केस में तो हुई थी. और अगर ख़त्म ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि it's going to give me all that I expected it to be. So a lot of times we say that, and my characters say in both these books to Gautam, in this it says that I will be happy only when I get a job, and this I say I will be happy only when I get married, right? And Gautam tells me in both that you first have to learn how to be happy before you can get a job, before you can get married. Oh. Because if we don't train ourselves to be happy, तो वो चीज़ हासिल करने से हम खुश बहुत होंगे, लेकिन हैप्पी हो ना हो पता नहीं. वो शॉर्ट रन के लिए बहुत सही है, SOS के लिए आपको खुशी मिल जाएगी. वो That's right. वो Because after all, टिकने वाली खुशी नहीं. आपकी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ कितनी भी लंबी हों, कितनी भी ऑप्युलेंट हों, कितने यॉट्स पे हों, कितने आपने पैसे खर्चे हों, और कितने फिल्म स्टार्स को बुलाया हो, is not a guarantee of what is going to unfold once married life starts. True. On that note, बहुत बहुत शुक्रिया for sharing out the ज्ञान of Buddha. Right. And it was lovely to have a chit chat with you after ages. Yes. I am glad that we had this conversation because it sets out a very clear perspective कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए. Right. And I really hope for all those people who are facing any kind of a crisis, Yes. maybe in work or maybe in love, Right. can actually learn something from this. And if you really want to ask anything, just comment down below on the video. I'll surely pass on your message to Gitanjali. Absolutely, and you can reach me as well on Insta, on LinkedIn, Yeah. on whatever. सब जगह available. Bilkul. Done. Yes, I'm always happy to help. And this is Buddha in Love. This is by Penguin. You can grab it from the bookshelf near you. Absolutely, and also on Kindle. अच्छा, this is also on Kindle. आजकल हर book Kindle में. What do you like more? Last question. Book या Kindle? Book. Book ना. खुशबू. That. हाँ. शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much for this. Absolutely. Thank you so much for having me here, Abhi.